Hey guys. Um Hi, I'm Raj and I'm just here letting out everything that I feel and everything that I think that I would want to talk to if there would be me sitting in front of me and having a conversation. But sometimes they say कि अपने आप में हम घुटते रह जाते हैं. अपने आप में हम you know we keep our thoughts to ourselves, we keep our emotions to ourselves, we keep our words to ourselves. हमसे कोई बात करने वाला नहीं होता. बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके सामने you can completely open up yourself, completely express yourself, be at most vulnerable in front of. शायद से आज के वक्त में वो हमारे माँ बाप ही हैं या मे बी कोई बहुत खास और अजीज़ दोस्त, मे बी योर लव्ड वन और इवन योर पेट मे बी. भले ही वो भाषा ना समझे लेकिन वो भाव ज़रूर समझ जाएंगे क्योंकि प्यार उनमें भी होता है. इनफैक्ट इंसान से ज़्यादा जानवरों में ही प्यार होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जैसे इन द ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू हैव देयर डायरीज, journals where they would write about everything that they felt, that they went through, that they experienced, their आप बीती पूरे दिन की. They would pick up a pen at the end of the day and would just write it on. I guess इस time पे our generation specifically, now that everything that we are surrounded with feels like Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Reddit, and what else? Every social media platform feels like a part of a certain syllabus. If you're in the game, if you have your own online or digital presence, ऐसा लगता है कि हमारे कोई स्कूल का होमवर्क है जिसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है, जिसकी कोई अटेंडेंस नहीं हो रही है, लेकिन वो करना सभी को है और वो कंप्लीट करना है. क्योंकि जब आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो यू सी ऑल द पीपल अराउंड योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर जर्नीज विद देम. यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. एंड मे बी दिस नॉट हैज़ टू मेक सेंस टू एवरी वन जो भी ये पॉडकास्ट या जो भी इस वक्त वट एवर आई एम सेइंग, it doesn't have to make sense to everyone, it doesn't have to relate or associate with everyone, but जो मुझे समझेगा वो मुझे समझेगा. बिकॉज वो कहते हैं ना कि what is personal is indeed universal. तो मेरे जैसे भले ही बाहर में 10 लोग नहीं होंगे, 100 लोग नहीं होंगे, लेकिन मुट्ठी भर लोग तो होंगे. एक लोग तो होगा, एक इंसान तो होगा. तो शायद वो ये रिलेट कर पाएगा कि यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर जर्नीज, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर एग्जिस्टेंस, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउटिंग अपने पोटेंशियल्स, अपनी स्किल्स को और अपने वजूद को. ये मेरे साथ अक्सर होता है और जब अकेला होता हूँ तब ज़्यादा होता है. बिकॉज अकेले मैं खुद से बात नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों. इवन दो आई एम इन अ प्रोफेशन ऑफ मेकिंग एंड क्रिएटिंग द सो कॉल्ड वर्ड ऑफ द सेंचुरी कॉन्टेंट, अपने आप से बात करने में बहुत मुश्किल होती है. अपने आप को समझने में भी बहुत मुश्किल होती है. दूसरी दुनिया आपके लिए जजमेंट्स लगा के बैठी है, तैयार है एक के बाद एक वर्ड ऑफ वर्डिक्ट. लेकिन आपको सही मायने में शायद आप ही समझ सकते हैं और वो बहुत कठिन है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी टफ. Because nobody knows you the way you know you. Nobody ever would, nobody ever will, nobody ever did. So I thought that I would start this audio journal where I'd just come at the end of the day and all the anxiety, all the thought process, all the intrigues, and every questionable pointer in my mind, whatever was troubling to me, I would just come out and let it out on this mic. It absolutely has to have no context. It absolutely has to have no agenda and no one to please or impress to. But I would just come and I would talk it out. I would let it out.
बस अपना दिल हल्का करूँगा, अपना मन हल्का करूँगा, अपनी आंखें हल्की करूँगा, और जो भी विचार, जो भी सुविचार, जो भी थॉट मेरे दिमाग में सुबह से लेकर रात तक के बना पनपा अभी भी थोड़ा सा खलल कर रहा है, I just come, express, and use my vocal skill and this mic as a tool to record it. And I'd let it out over there so that even I can hear what the hell did I even speak. और जिसको अगर इस सुन के या फिर इसे महसूस करके, if they can find some relativity into it, then what can be better than that? My mom and dad have gone out of the station today. I'm all alone by myself in the house. और अकेलापन जो खाने आता है ना, वो आई एम फीलिंग टुडे, बिकॉज 2020 के बाद से I have been very close with my family post 2020 specifically. Why I'm saying is because मैंने अपना घर 2013 में छोड़ दिया था, 15 साल की उम्र में, 15-16 या 11th 12th did from Hyderabad, then went to Bombay 2015 to 2019, एक साल job 2020. Now Corona came as a curse for some, blessing for some, but it came and it was there to come and it stayed. तो काफ़ी अरसे बाद, जहाँ सिर्फ मैं दिवाली और गणपति में मुश्किल से 4 या 5 दिनों के लिए घर आया करता था, अब मैं अच्छे अरसे और अच्छे लंबे वक्त के लिए घर आया, घर का खाना खाया, घर के बिस्तर पर सोया. अब इस बार रोटी और चपाती के लिए 6-6 रुपये या 10-10 रुपये नहीं देने पड़ते थे हर एक रोटी पर. और एक्स्ट्रा चावल पर दाल मांगने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था. सो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा. And I guess almost everyone who came back home in this period needed that feeling, needed that home that they were missing, or they kind of grew in a certain environment or in a certain way out of living out of their homes and missing that homely feeling and yet being okay about it. So everyone who came back home finally realized the value of this word home, घर, जो 4 दीवारों से नहीं मगर उन 4 दीवारों के अंदर जो लोग रहते हैं उससे बनता है. सो 2020-2022, इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ. मैं जून में यहाँ आया था बिकॉज 3 months में बॉम्बे में ही फंसा हुआ था. 30th May, 31st May को आई केम बैक. 1st June, 2nd June को मैं घर पे आया आफ्टर डूइंग माई कोविड टेस्ट. सो इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ घर पे. और काफ़ी इट्स लाइक अ बॉन्ड नाउ. बहुत पक्का एकदम सॉलिड टाइम मैंने घर पे स्पेंड किया इतने वक्त के बाद. मॉम, डैड, खुशी, माई सिस्टर. तो अभी थोड़ा सा ना बॉम्बे वापस जाने के लिए भी इट फील्स लाइक एन एम्प्टी स्पेस इन माई हार्ट. If I'll be there, I imagine those scenarios when I'll be there, again in the same lifestyle that I was before 2020. Then it used to seem normal because even though it was not normal, the whole world made that style of living normal. But when we finally realized the value of life, the value of being alive and being together, being with your family, we realized what reality is and असलियत में क्या नॉर्मल है, जीने का सिंपल तरीका. तो अब बॉम्बे जाने से भी थोड़ी सी घबराहट होती है कि वापस जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, बट विल हैव टू डू इट. व्हाट हैज़ टू बी डन हैज़ टू बी डन. सो आई एम मेकिंग दिस ऑडियो जर्नल इज़ बिकॉज आज मेरे मॉम डैड गए हुए बाहर शादी में इन गोंदिया. I dropped them at the station at around 4:30. And then since that time, मैं घर पे आया and I worked, got my shift done at 7:30. And तब से लेकर I've been all by myself alone. बाहर गया, होटल में खाना खाया. So finally in my own city, my hometown भंडारा, यहाँ पर भी मुझे वो आज इतने सालों बाद बॉम्बे वाला फील है कि आई वेंट आउट टू अ रेस्टोरेंट, खाना खाने के लिए भूख लगी है, रोटी मंगाई, दाल मंगाया, दाल तड़का, दैट्स माय फेवरेट. एंड इस बार रोटी के लिए पैसा देना पड़ा. सो इट्स अमेजिंग कि ये भी एक्सपीरियंस मैंने अपने होम टाउन में एक्सपीरियंस किया
which I never ever thought of that I'd have to do something like this. So वो अकेलापन काटने तो आता है यार. Without your mom, without your dad, without your loved ones, वो अकेलापन ज़रूर काटने आता है. And when you're in a constant state of hustle, you're trying to achieve something, you're trying to do something, you have something going on in your life which is much bigger than you, which is more than your bigger purpose in life. And when you start questioning the universe's plan of making you so-called feel happy or successful, थोड़ा सा तो एक zoned out phase आता है. And I guess it comes in everyone's life, in everyone's daily routine, and it's not just someone like me. कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, in every sphere, in every fraternity of life, भले ही वो कोई भी काम कर रहा हो, we always feel, a bit low, a bit confused, a bit questioned. ऐसा लगता है कि there should be someone that we can hug, we can just tell everything to. And कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें अपने मॉम डैड से भी कहीं ना कहीं कहने को कतराते हैं. That's why I guess we have friends that we can talk to. We have our partners, then we can share it. But for the people who don't have, or for the individuals who lack such relationships or who lack such bonds in their lives, I just want to say that, what, it's going to be okay. And I'm saying this to myself because I am one of those people where maybe I feel I don't have a lot of friends. And maybe somewhere down the line and all these years, I lost a lot more than I gained a few. So I don't have a lot of friends, but whatever I have, they're the best, and I do share something with them. But इंसानी दिल है, इंसानी जज्बात है. हर चीज़ बाहर नहीं आती, हर चीज़ बयान नहीं होती. जो खुद से आप कह सको वो दूसरों से नहीं कह पाते हो, लेकिन खुद से जब आप कहते हो तो खुद से सुन के उसे खुद से कंज्यूम करके उस पर हल निकालना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है. दैट नॉट एवरी वन इज़ अ मास्टर एट. So I guess this is what I'm doing, trying to have an audio journal. And so that maybe I can listen to it later on and you can listen to it. And if at all you find any value in your life because of this, I can nothing be just but grateful. Akela hu, that's why I'm recording this. And maybe I might make a habit out of it. What else? I guess we all should take our time. Just give ourselves a little bit of break. Try to understand. Try to breathe in, breathe out. That is very important. The control on the breathing process of a human being, that is very important, because that's like the answer to almost every query in the world. If you can control your breathing in every damn situation, you can be in control of it. And we need not be hard on ourselves. We need to trust our process. We need to trust our journey. We need to trust the Almighty's plan. And we need to be loyal to our own hustle and to our own constant efforts. And I guess we need to trust ourselves more often. We need to love ourselves at every damn point of time and not seek any kind of validation or expectations or any kind of love from the people who would love you for their own terms and conditions. Well, only a ma or a pataji, mom and dad, they can love out of terms and conditions. So maybe seek their love and seek their expectations of you. And love them till your last breath. That's what I can say. And just keep it cool. Just keep it all right. Just keep it okay. And I guess the universe will finally, turn itself into a scenario where you will start getting the answers of your questions. And this happens, but it also requires and provided that you are doing your bit. You are putting out the actions. You are putting out the efforts. You are putting out a message to the universe that, I'm not going to rest. I'm going to keep moving. If I'm not going to move, I'm going to crawl. If I'm not going to crawl, I'm going to do something. But to hell with you, I'm going to do something, and I'm not going to stop. Because at the end of the day, life's an illusion, and we are all living one. We are all living our illusion. Not anyone else's definition of our life makes or gives sense to our lives. Only we can, and only we do.
when we are lying on our deathbeds and finally questioning the entire cycle of our lives. Either it has to make sense, or either it has to be something greater than us, which makes us feel alive even at that deathbed, counting our last days. So just do it because it's not gonna matter at the end of the day. Do it just because it's not gonna matter at the end of the day. You have to find your meaning in this whole meaningless existence of ours. This bundle of energy, this quantum space energy, and this whole big planet Earth, and many like this might be existing out there. But we have to find our meaning in this world that's not gonna care about you if you're just vanished or gone the very next day. But a few will, who love you. So do it for them. Do it for those handful of people who love you. Because that's what stays. Love and care. Alright, that's my time. Take care. I guess I'm gonna do this more often. Let me know if you love it or whatever. Dhanyavaad.